वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑप्शंस की बात आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ। आज हम लोग 31 दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2023 की बात होने वाली है। तो नए साल का पहले हफ्ते की बात होगी यहाँ पे। तो हमारे साथ एज यूजुअल दिनेश नागपाल सर हैं। दिनेश सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू Good. our episode. And also sir, thank you for taking time for this because it's the 31st and you would have definitely had some plans for yourself as well. Good morning, everyone, and wishing everyone a happy New Year in advance. और yeah, so New Year हो या कुछ भी हो, काम काम करना पड़ता है सर अपने को एक क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सर, बार। अपडेट इस बार हम लोग टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी एक्सेल डाल दिया था लास्ट टाइम का हमने। वी हैड ऑलरेडी पुट आउट आवर Perfect. अपडेट ट्रैकर. We will be putting it for this week as well in the Telegram group. So we can skip that and we can move on to our analysis directly because Okay. updates will be published on social media handles from our end. Right. Okay. So I'll take over. Yes. Yeah. So before once we start, I purposely kept the screen as you can see monthly दिखा रहा हूँ, Yes. स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ना आज इस समय सोशल मीडिया में सब लोग बात कर रहे हैं बेरिश एंगल्फिंग, मंथली बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, मंथली बेरिश, सब कुछ बेच दो, ये वो और खराब है। बट बेरिश एंगल्फिंग है, नो डाउट अबाउट इट। सो जस्ट Hmm. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैज आल्सो डेवलप्ड। इस समय मार्केट इज लाइक आप ट्रेडर को छेदी सिंह बना रहा है, जो मैं भी दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज कर देगा कि माल ले कि माल दे। इस समय वो स्टेज है मार्केट का। ओके, इट्स नॉट अ स्टेज वे यू कैन से एकदम माल बेचो और एकदम माल खरीदो, दोनों स्टेज के बीच में फंसा के रख रहा है। सो ये हमारा बेरिश इनगल्फिंग Hmm. बन गया इधर में, नो डाउट अबाउट इट। सो बेरिश एंगल्फिंग बन गया। बट जो कैंडल स्टिक्स करते हैं, दोनों जस्ट नॉट बेरिश एंगल्फिंग, दोज हु अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक्स मस्ट हैव नोटेड a very interesting thing which has happened, which is a three candle pattern formation and upside Tasuki gap has happened out here. वापस बोलो, क्या है ये? ये है अपसाइड तासुकी गैप। ओके. सो अपसाइड तासुकी गैप जो होता है, इट्स द थ्री कैंडल फॉर्मेशन जिसमें पहला कैंडल अप ट्रेंड वाला होता है। सो हियर वी कैन सी दैट कैंडल फॉर्मेशन विच टुक प्लेस आउट हियर। ये वाली जो कैंडल है, ये वाला अप ट्रेंड कैंडल है, राइट। ये मार्केट साइडवेज था, ब्रेकआउट मारा उसने ऊपर, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। सेकेंड कैंडल जो बनता है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर होता है। सो यू कैन सी द क्लोज ऑफ द फर्स्ट एंड द ओपन ऑफ द सेकेंड ऊपर है उसका, राइट। और ये पूरा महीना, ये पूरा कैंडल उसके ऊपर रहेगा, इट विल नॉट लेट द गैप गेट कवर्ड। जो थर्ड कैंडल होगा वो कॉन्ट्रा कैंडल होगा, इट विल ट्राई टू कवर द गैप एटलीस्ट पार्शियल और फुल एंड गो एंड क्लोज अबव, go and close above. So it's a perfect upside Tasuki gap. So in an upside Tasuki gap candle formation में ये बोला जाता है कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक हुई है उसकी, अब पुल बैक कंप्लीट, नाउ रिजम्पशन ऑफ रैली। इट्स अ बुलिश सिग्नल, थ्री कैंडल में बुलिश है। इंडिविजुअल कैंडल आप देखोगे तो आपको पूरा डरा के डर का माहौल बना देगा अगर आप खाली बेरिश सिग्नल। सो व्हेन यू सी इट कलेक्टिवली, इट इज नॉट अ बेरिश साइन, इट इज नॉट एट ऑल अ बेरिश साइन। ओके, सो ये हो गया हमारा मंथली। सो डोंट लुक एट इट कि बेरिश एंगल्फिंग सब माल बेच दो, वो सब वो अभी वो बहुत वो जब तक टासुकी गैप फेलियर नहीं होगा हम उसको नहीं मानेंगे उसको। स्पेशली दिस इज फॉर द मंथली ट्रेडर्स। ओके, सो ये हो गया हमारा मंथली वाला। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली। लाइक आई सेड, बहुत ये वीक का जो सेटअप है वो वैसा ही सेटअप करके रखा है। ये इधर में ट्वीजर बॉटम है वीकली में। ये ट्वीजर बॉटम बना है, अगेन नॉट अ बेरिश साइन, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट ने मंडे को टर्न मारा था, तो अगेन नॉट अ सिनेरियो कि आप माल बेच दो, इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगा ये वाला सीन। ओके, बट व्हेन यू कम डाउन टू द डेली, इट्स अ डार्क क्लाउड कवर। फ्राइडे वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल बना, ये डार्क क्लाउड कवर है, डीसीसी जिसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक लैंग्वेज।
So you have a monthly giving you both a bearish engulfing and an upside Tasuki. You have a weekly giving you a tweezer bottom, but the daily is giving you a dark cloud cover. Now, the reason of the dark cloud cover is to make the bearish engulfing of the monthly look valid. अगर कल वो लास्ट 1 आवर में ड्रॉप नहीं आया होता तो बेरिश एंगल्फिंग वैलिड नहीं होता. तो इट वाज डन टू एडजस्ट, जैसा भी आप समझो उसको, वो करने का कोशिश किया गया था. नाउ कमिंग टू इचिमोकु, इन द इचिमोकु सेटअप वी आर इनसाइड अ क्लाउड. ओके, इट्स अ क्लियर क्लाउड, कुमो जो बोलते हैं इचिमोकु ट्रेडर्स. क्लाउड के अंदर मार्केट अनसर्टेन होता है, मतलब ना बुलिश है ना बेरिश है, आप दोनों साइड का ट्रेडर का गेम होता है ये माना. और नंबर 2, मार्केट रिमेन्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल व्हेन इनसाइड द क्लाउड, बिकॉज इट्स नॉट अ क्लियर डायरेक्शन कि क्या करने वाले. नाउ वन एग्जांपल इज लुक एट दिस जोन ऑफ अक्टूबर आउट हियर, हाउ इट वाज. रेड कैंडल, मैसिव ग्रीन कैंडल, रेड अगेन ग्रीन अगेन रेड अगेन. ये जो गेम होता है, पहला तो कैंडल का साइज बड़ा होते जाए इनसाइड दिस, दूसरा डायरेक्शनलेस मार्केट होता है उस समय. दोनों साइड पटक रहा है, दोनों साइड ट्रेडर को मार रहा है उस समय अंदर. सो यहाँ में भी आप देखोगे जो फ्राइडे क्लोज हुआ था हमारा, ऑल हेल. और हमने सैटरडे को यही कवर किया कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट है. 16-17-600 आएगा, जस्ट गो बाय लाइक मैट, बट आया नहीं. बट एट द सेम टाइम वी हैड सेड कि 925 के ऊपर रह गया तो ये बुचर कर देगा शॉर्ट्स को, और उसने वही किया. टिपिकली टुक द मूव ऑल द वे टू 17,300 और ऑलमोस्ट 250 एंड इट डिड दैट. सो लुक एट दिस कैंडल अगेन इनसाइड द क्लाउड कैंडल. क्रेजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन करता है जब क्लाउड के अंदर होता है मार्केट. सो मैसिव कैंडल्स हैपनिंग इनसाइड द क्लाउड could happen again next week. Now for the strategy for the next week is slightly different. थोड़ा सा flexible strategy है because uncertainty area में हम घुस रहे हैं. Even if I come down to the hourly, इसमें भी छोटा क्लाउड के अंदर घुस गया. ओके, सो क्लाउड के अंदर में थोड़ा सा हमको वो रहना पड़ता है. तो my strategy for the week is to go to Nifty. Yeah. Initiate, my first initiation on Monday morning is going to be sell a 800 17,800 put and sell a 18,400 call. Okay, दोनों बेच दो. शॉर्ट टोटल कंबाइंड प्रीमियम अराउंड 39-40 रुपीज है, और 1:1. ओके, नॉट इन अ 1:2 और 2:1, ऐसा कुछ नहीं करना है. 1:1 रेशियो में उसको करना है ट्रेड को. ये इनिशिएट स्टार्ट है ट्रेड का. अगर 17,975 के नीचे, 17,975 के नीचे 30 मिनट्स के लिए भी ट्रेड करता है तो एड 2x 18,000 पुट. 2x. ओके, ये 1:1 चल रहा है, तब बाय होगा. इट होल्ड ऑन टू योर स्ट्रैंगल ऑफ 17,800 and 18,400. अब बिलो 17,975 30 मिनट्स रहा तो इनिशिएट द add a double quantity of 18,000 put and let it go. On the other hand, अगर 18,225 के ऊपर अगर 30 मिनट्स रहा, add double quantity 18,200 call. 18,200 add the money. दोनों केस में add the money add करना है, और double quantity of the strangle you have sold, double quantity, because uncertainty area में है, movements are going to be very large. Okay. तो आपने जो स्ट्रैंगल बेचा है वो एक साइड आपको हर्ट करेगा, तो वी कंपेंसेट इट बाय देन बाइंग. तब तक कुछ नहीं करना है. इन द जोन ऑफ 17,975 to 18,225 इट इज खेलो इंडिया खेलो. उस रेंज के अंदर हम कुछ नहीं करते, खाली स्ट्रैंगल बेचकर चुप करके बैठे रहते हैं कि अब हमको मोमेंट देगा उसमें. और उसका स्टॉप लॉस इन बोथ द call and put buy zone is 18,150 on 30-minute basis. 18,150. So I've written it out here. मैं बोला था because थोड़ा सा complicated है सर ये. Just a minute. Yeah. Initiating a strangle, that is 18,800 17,800 put sell, 18,400 call sell, that is 1:1. आप एक लॉट बेचिए 39-40 के आसपास का प्रीमियम. तो मतलब 1,10,000 से 1,15,000 का इसका ये वाला 1,60,000
3000 ऑड का 1 लाख लगेगा, 110 पकड़ के चलो आप, बिकॉज 1 लाख वेयर मार्जिन मंडे को थोड़ा ऑल्टरनेट हाँ हो सकता है। तो 1 लाख 10 का ये रहेगा। तो सर इसके हाँ आसपास 2,000 रुपये बन रहे हैं, मतलब 2% का यहाँ पे गेन पॉसिबल है अगर ये रेंज में रह गया तो। हाँ प्लस सर आप कह रहे हो कि अगर 18,225 के ऊपर रहा आधे घंटे के लिए, अगर राइट निफ्टी नहीं हाँ 18,225 के ऊपर आधे घंटे के लिए सस्टेन करता है, तो आप 2 लॉट डबल क्वांटिटी, मतलब अगर आपने एक सेट स्ट्रैंगल सेल किया है तो आप 2 लॉट 18,200 का कॉल बाय करेंगे, राइट बराबर है। और राइट अगर नीचे निफ्टी जाता है 18,000 के, सही 17,975 के नीचे जाता है, 17,975 के नीचे अगर निफ्टी जाता है और आधा घंटा सस्टेन करता है, तो डबल क्वांटिटी स्ट्रैंगल का आप 18,000 का पुट बाय करेंगे। राइट दोनों केसेस में स्टॉप लॉस वुड बी 18,150। इसका मतलब सर ऊपर में आप 75 पॉइंट, नीचे में भी आप अराउंड हाँ or the target for this, the पूरा target ज्यादा for होता है। both the sides, हाँ the target for both the sides, अगर upside break होता है तो हाँ my target is around 18,450 to 550, ओके अपसाइड में ब्रेक होता है। और अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हाँ 17,800 से लेके 17,700। ओके, मतलब So प्रीवियस the के so आसपास। the because you have sold both the side of the triangle, it can hurt you, हम्म right? Because VIX is rising और आपको एक साइड हर्ट करेगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम्म उस समय हमको वो जो हमने जो ऑप्शन स्ट्राइक खरीदा है डबल हम्म क्वांटिटी, वो उसको पूरा मेकअप कर देगा और आपको इनफैक्ट प्रॉफिट में ला देगा पुट रेट एंड उसमें। ओके सर, फिर भी ये जो आपने स्ट्रैटेजी बताया ये हमारे सीजनल ट्रेडर्स के लिए है। हाँ क्या मैं अगर अगर मैं एक नॉर्मल नेकेड बायर हूँ, मतलब मैं हाँ नेकेड ही निफ्टी में करता हूँ, तो हाँ क्या मैं जो सेकंड लेग आपने बोला है कि 18,225 के ऊपर आधे घंटे के लिए निफ्टी सस्टेन होता है, तो मैं राइट 18,200 कॉल बाय करके जा सकता हूँ। राइट और सेम राइट एकदम 17,975 के नीचे निफ्टी आधे घंटे के लिए सस्टेन करता है, तो मैं आधे 18,000 का पुट बाय करके जा करेक्ट सकता करेक्ट, हूँ तब अगर नेकेड आप। वाले, दैट्स फॉर हाँ द नेकेड ट्रेडर जो मना ओके जो डायरेक्शन ट्रेड करना चाहते हैं सिर्फ ऑप्शन चार्ट में, उनके लिए वो स्ट्रेटेजी रहेगा विद तो 18,150 स्पॉट एज योर स्टॉप लॉस। ओके तो 30 व्यूअर्स, द व्यू ऑन निफ्टी इज वेरी क्लियर। सर इज सेइंग कि निफ्टी 3 टाइम फ्रेम में 3 अलग चीज कह रहा है, मतलब मंथली में और वीकली में थोड़ा बुलिशनेस है, डेली में बुलिशनेस नहीं है। इसके लिए एक ऐसे टाइम में जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताया है जहाँ पे हम एक स्ट्रैंगल सेल करके जा रहे हैं। स्ट्रैंगल सेल मतलब कॉल और पुट दो अलग स्ट्राइक का आप बेच के जा रहे हो, वो उन्होंने बताया है। और जो नेकेड बायर्स है उनके लिए एक कंडीशन दिया है कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 18,225 के ऊपर रह जाता है तो आप कॉल बाय कीजिए, 17,975 के नीचे 17,975 बेसिकली उसके नीचे अगर रहता है तो आप पुट बाय कीजिए। Both the cases stop loss would be 18,150 only and only if it sustains for 30 minutes. I think राइट, it's in गिव there. इट 30 minutes, 30 not minutes. don't jump into the trade until that Okay. does not happen. Okay. So sir, this was Nifty. Can we move on to Bank Yeah Nifty from here? yeah Yeah. I hope my voice is clear. yeah yeah, your voice is perfect. Yeah. So इधर भी वीकली में ट्वीजर बॉटम, Yeah. ओके, This is a क्लियर monthly. ट्वीजर बॉटम है। और इसका जो आवरली है, आई वांट टू स्टार्ट विद द आवरली इन दिस केस। इन द आवरली दिस वाज अ हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन व्हिच डिड अ 1.6x फिबोनाची डिस्टेंस। तो इसने हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन पूरा कंप्लीट किया। लुक एट वेयर द पुल बैक हैज गॉन टू, राइट इनसाइड। Hmm. सो आगे जाके 42,600 इज लाइक अ वॉल। जब तक 43. 42,600 के नीचे है, 43,600 के नीचे है, बैंक निफ्टी will, it's not easy for bank nifty to break above that wall and proceed beyond that zone out there. तो और नीचे में उसको सपोर्ट 42,600 पर है, तो बड़ा रेंज है, इसमें भी बड़ा रेंज खेल रहा है। इसमें आई वुड सजेस्ट if it comes down to this level, Hmm. 42,600 Hmm. odd level, you can attempt a long near 42,600. Keep a stop loss at 42,350. Okay, 42,350 का stop loss, 42,600 पर take a at the money call. Try to run it. Similarly, 42,500 के पास, Hmm. 42,500 के पास buy a put. 42,600 stop loss. Both the cases 30 minutes. Okay. 30 minutes This is का दे दो एंड गो विद द डायरेक्शन। इसमें कोई स्प्रेड सेलिंग नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। आप अगर लिखोगे वो एक साइड आपको पूरा स्क्वाश कर देगा, दूसरा साइड जाके। तो सर बिकॉज यहाँ तो इवन इन द काफी। डेली, इवन इन द डेली यू कैन सी एक
42 व्हाट डू कॉल 800 600 पर सपोर्ट बेस बना रहा है, पर ऊपर निकालना उसके लिए बहुत टफ हो रहा है एट 42 43 600। तो रेंज बाउंड में बैंक निफ्टी गेम दिखाने वाला है, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक हमको ओके, पूरा। तो बेसिकली सर यू आर सेइंग 43600 ऊपर में बहुत हाईवी वॉल है, हाँ, नीचे में 42600। इफ यू कैन कम राइट, टू अर्ली दैट विल बी मोर क्लियर फॉर अस। या सो या इस लेवल पर आएगा ना, तो इमेजिन ना आपको 740 टू 700 भी पकड़ो तो आपको 200 300 पॉइंट का ही रिस्क दे रहा है, और फिर वो रैली अटेम्प्ट कर सकता है वहां से ऊपर की तरफ। राइट, फेलियर टू होल्ड दिस देन इट्स इन डेंजर, देन इट गोज ऑल द वे डाउन। या तो बट इतना जल्दी दिस इज अ मैसिव बुलिश कुमो, इतना जल्दी ये गिव अप नहीं करता है। सो एटलीस्ट दिस थर्सडे तक इसका इट्स अ मेजर ब्रेक डाउन ओनली बिलो नाउ 40 टू 400, 40 टू 400 300 350 पकड़ते एक बार, उसके बिलो ही मेजर ब्रेक डाउन होता है बैंक निफ्टी। तो ओके। वो थोड़ा टाइम पास जोन में घुस गया वो भी इस समय। अच्छा तो सर ये कह रहे हो आप 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी रेंज है, ऊपर हाँ, में 43600 मतलब 43500 43450 के आसपास से आता है, तो ट्राई टू शॉर्ट इट विद अ स्टॉप या लॉस। विथ 43 600 30 मिनट स्टॉप लॉस, ओके, 30 मिनट और स्टॉप नीचे बस में उसको उतना स्टॉप 42500, लॉस रखो। या नीचे में 42500 600 के पास, 600 के पास, एज क्लोज टू 600, 600 बट अटेम्प्ट अ थोड़ा लॉस। स्टॉप लॉस डीपर है, 42 350 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा डीपर है उस जोन में, ओके, बिकॉज और उसके आई नीचे थिंक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है बैंक निफ्टी का। तो नॉर्मली क्या होता है, अ ब्रेकडाउन डज नॉट हैपन इन वन गो, इट goes attempts, pulls, attempts, and then it collapses. So it won't be that easy also. ये वीक पूरा सा बहुत ही वॉलेटाइल वीक एक्सपेक्टेशन है मेरा इस वीक। ओके। सर एक सरप्राइज है अपने व्यूअर्स के लिए, वो मैं रिवील हाँ, कर दूं कि एंड में आपको रिवील करना है फॉर देम। अच्छा, लेट्स कीप इट थोड़ा सस्पेंस बना के रखते ओके ओके हैं। ठीक है। Okay. तो Yeah. बैंक निफ्टी सर आई थिंक आपने कोई स्ट्रैटेजी अपनी तरफ से बनाई नहीं है, आपने बस एक No, रेंज दिया है। no, तो आई विल कंसिडर दिस एज नो व्यू फ्रॉम योर एंड, बट right. जिनको ट्रेड करना है आपने बताया कि कौन से रेंज में इनिशिएट लॉन्ग करो और कौन से रेंज में आप Yeah. इनिशिएट शॉर्ट करो। आई थिंक बैंक निफ्टी इज क्लियर, आर व्यू इज नो व्यू, वी विल नॉट बी मतलब Yeah. हमारे यहाँ से I will not be very comfortable doing this. ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स नाउ सर, आपके स्टॉक्स Yeah, पे चल। yeah. या So I've got again in alphabetical order. First stock is Crompton. Okay, now Crompton इसको has initiated a bullish harmonic pattern. Okay? Because the way the market is set right now, it's a market of mid caps and small caps. Because अपने पास small cap हाँ, ऑप्शन होता नहीं है करने का, तो वी कांट डू इट। सो इसमें एक बुलिश हार्मोनिक गाटले बने क्रॉम्पटन में, हम्म और उसने टर्न दे दिया है, यहाँ से एक अच्छा कैंडल बनाया, दो लॉन्ग लेग कैंडल बन गया है, माना सपोर्ट आ गया है उस लेवल पे। सो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 1 सेकेंड 330 31 331, ओके राइट नाउ ट्रेडिंग एट 336 एंड हाफ, आप 37 पकड़ के चलो एक बार, 337, स्टॉप लॉस इज 331, टारगेट ऑफ 350 370 ओके इसमें इसमें 6 रुपीज रिस्क है, 14 रुपीज टू 25 रुपीज रिवॉर्ड है। माई सजेशन वुड बी टू गो विद अ 340 कॉल, ओके it's trading around 10 rupees, the 340 call, keep a stop loss at 6 rupees and a target of 17 and 25 in that. ओके, तो 10 के आसपास है 1725, मतलब ओ गॉड दैट इज ऑलमोस्ट 70% एंड डबल। Yeah. सो So, 340 कॉल बाय, स्टॉप लॉस yeah. 331, हाँ, टारगेट ऑफ 17 एंड 25, 25. दैट वुड With बी, a risk of दैट वुड $4. बी योर Keep a risk of ट्रेड। $4 in this Crompton case. और बहुत ओके क्लियर अच्छा पैटर्न बना है, और movement is expected to be good from here इसमें. ओके So this is the first trade I have in mind, Crompton. The other one is PVR. Okay. Now, if I go to PVR, I'll just show you the structure. बहुत ही bearish structure है, बहुत बेरिश है, लार्ज, लुक एट दिस कैंडल, और ये उसका एक पुल बैक इनसाइड, ये अटेम्प्टेड था बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड था, इट्स गॉन बैक हियर, सो इट्स अगेन कम इनटू द हिटिंग जोन। ओके, इसमें थोड़ा बेरिश सेटअप लग रहा है, मे बी थोड़ा सा ऊपर जाके भी गिरेगा, कुछ करेंगे। सो माय आई हैव मेड अ स्ट्रेटजी आउट देयर ऑफ अ पुट स्प्रेड। ओके, सो आई जस्ट गो टू सेव स्ट्रेटजी,
Yeah, I can see PVR there. PVR. So I would suggest a 1700 put buy at Okay. 46 and a 1640 put sell at 25, like that. इसमें uh, इसमें I would prefer to go with a what we call it a spread than a naked one. Okay, Okay. because there is a scope of 10-15 rupee up move also possible. तो अगर हम उसको टाइट करने जाएंगे और फिर वहां से टर्न कर जाएगा, then Hmm. it वो डायलेमा रहता है ये क्या हो रहा है. तो इट इज बेटर टू गो इन दिस ट्रेड विथ अ कैप रिस्क ऑफ 20 रुपीज एंड इनिशिएट दिस ट्रेड अकॉर्डिंगली. तो वन इज टू वन, इसमें कोई हम वो नहीं करेंगे, मतलब 1:2 वो सब नहीं करना है बिकॉज मंथ हैज जस्ट स्टार्टेड. ओके, सो यू डोंट This वांट टू looks डू like अ. 85. This is approximately 8300 के आसपास का loss. Risk of 8300 है. 407 And इज द you लॉट have साइज, बड़ा ऑड लॉट है. 400 से 20. 1:2 risk to reward. हाँ, Yeah, it is रिस्क 1:2 रिवॉर्ड इज risk to वेरी reward गुड. if you can रिस्क calculate. रिवॉर्ड Yeah, सेटअप बहुत अच्छा है absolutely. उसका. और इट्स पूरा अपने पास महीना है हाथ में. अगर एग्रेसिव होगा तो वी विल अपडेट इट नेक्स्ट सैटरडे इसको कैसे चेंज करना है. फिलहाल उसको इसको आई वुड नॉट गो विद ओनली बाय पुट इन दिस केस एकदम. Okay. तो सर आपने I think this was your last script that या you wanted to discuss, right? PVR? या Yeah. So सर मैं थोड़ा थोड़ा आश ये ज्ञान डाल देता हूँ इस पे कि मेनी व्यूअर्स हैड रिक्वेस्टेड कि आपको इचिमोकू जो सर यूज करते हैं, आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल रिक्वेस्टिंग कि आपको इचिमोकू जानना था ये सर कैसे इस चीज को एनालाइज करते हैं और किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज कर रहे हैं. तो आपके लिए वी हैव अ न्यू ईयर सरप्राइज. Tomorrow at 11 a.m. if you come, you will be seeing Dinesh sir teaching Ichimoku to ICICI viewers on our YouTube channel. डिटेल्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. मोर डिटेल्स विल बी गिवन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. आवर टेलीग्राम चैनल इज ICICI Direct Official with a blue tick. So please join our telegram channel for more details. And yes, tomorrow at 11 a.m. we have one session with Dinesh sir on Ichimoku trading. How does he trade Ichimoku? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो, और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं, मार्केट साइडवेज है कि एक मोमेंटम मार्केट है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो सब उन्होंने कवर किया है. तो कल 11 बजे आप लोग प्लीज लॉग इन कीजिएगा. न्यू ईयर सरप्राइज फ्रॉम ICICI Direct to our ICICI Direct viewers from Dinesh sir. And now let us move on to the Q&A section. तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों या के, मैं ले लेता हूँ एज यूजुअल. या एंड टुडे वी विल बी वाइंडिंग अप अ बिट अर्लियर बिकॉज ऑफ न्यू ईयर्स. Sir also has some plans, so we will be taking a session till 11:45, 11:50 only. ठीक है? या Sir, someone has bought Tata Power या options 215 call at 315 at 3.75. टाटा पावर में बुलिश हार्मोनिक एबीसीडी रिवर्सल हुआ है, काफी फास्ट मूव आया. सो इट कुड टिल इट इज बिलो 210 एक पुल बैक मार सकता है, छोटा छोटा पुल बैक आ सकता है. इसका नेक्स्ट टारगेट नो आई कैन सी दिस एज अ रेजिस्टेंस 212. वंस इट ब्रेक्स अबव 212 यू कैन एक्सपेक्ट 220. Hmm. 220 आराम से दे सकता है अपसाइड में. और 212 या या ये जो अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस पर खड़ा है, और जो पुल बैक आएगा इसका, इट कुड कम डाउन टू 203 to 202 pull back, because unless it doesn't take out 210, the next move till 215 to 20 can be थोड़ा consolidation. यहाँ में एक Okay. attempt, दो, एक, दो, तीन. The next move above 210 is for 220. Okay. और Sir, बी what stop प्रिपेयर्ड loss? कि एक पुल बैक थोड़ा टाइम पास कर सकता है कुछ टाइम, Okay. because month has just started. The melting will be slow in this case, so like that. Yeah. Okay. Once again, I'm just scrolling down. Oh, okay. Someone has please give status of call spread. Vikram sir, we have already given it on our Telegram channel. The Excel file is already uploaded, so you can have a look. So if someone is asking view on RBL Bank, Hmm. I think क्या view है पता नहीं. Can just give a generic view and then we can move on because we have some specific questions ahead. Yeah, I had this stock in mind.
बिकॉज इचिमोकू का हिसाब से इसमें एक टाइम एंड प्राइस इक्विलिब्रियम बना, मतलब जो जो रैली आई है नीचे से, इट कुड नाउ पॉज, ये बहुत शार्प रैली है, इट कुड नाउ पॉज नियर 190 टू 220 के जोन में एक पॉज मारेगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश बाय, try to buy as close to 165, or maybe if you get down to 150, nothing like it, nothing like ओके it. इसमें वो एक्सट्रीम हाई बीटा स्टॉक है, इसमें छोटा मोटा स्टॉप लॉस बनता नहीं है, वो इसमें बहुत शार्प मूव्स देता है दोनों साइड. सर, वी हैव एन ऑप्शंस क्वेरी. Someone has sold 18,000 put of Nifty monthly at वाओ, 150. at 150 Nifty monthly 18,000 put. Okay, let's go to one. Just like this. Monthly, right? 18,000. 18,000 put, you said, right? Okay. इसमें दिख नहीं रहा है, so I'll come back here. Okay. So that 18,000 put that you are talking about, like I said, जो मेरा जो strategy था, 17,975 के नीचे डेंजर है, going all the way down to 700, and possibly 800 minimum, 700 to 600 का. तो आई वुड सजेस्ट उस शॉर्ट पुट से आप एक बार निकल जाना, अगर 975 के नीचे 35 मिनट भी ट्रेड करता है, बिकॉज फिर वो आपको नीचे ले जाएगा ऑल द वे टू ये आपका लेवल्स ऑफ 400-700, तो और हर्ट करेगा वो आपको, ये मंथली हो या कुछ भी. और अपसाइड में जब तक वो 225 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, उसमें डिके नहीं आने वाली. एक बार हाँ निफ्टी 18225 के ऊपर ट्रेड करने लग गया और मूवमेंट देगा, तब उसमें डिके फास्टर होगा. Okay. सो बिलो 975 स्ट्रिक्टली एडवाइज उसको आप मत पकड़ो, बहुत हर्ट कर सकता है वो आपको उस समय. देन यू वुड रादर बाय अ 17900 पुट एट दैट टाइम एंड नेगेट इट, और जस्ट गेट आउट ऑफ दैट. Okay. Sir, someone has BEL 100 call 100 का call option bought. बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीईएल, ये कवर्ड इट, इसमें हार्मोनिक फेल हो गया था हमारा, और अब स्ट्रक्चर वाइज ठीक ही है, बट दिस यू कैन सी दिस लेवल आउट हियर 101. इतना इजी नहीं होने वाला है 101 क्रॉस करना. इसके लिए 101 के ऊपर you'll get a very good move till 104 and odd, 100 next resistance सीधा 104 होता है उसमें, 101 के ऊपर. सर, इसमें अगर आप आवरली में जाओ, आई थिंक सो देयर इज एन हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रेडी. बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. अनलेस इट डजंट ट्रेड अबव 101, ओके. मूवमेंट नहीं आएगी. बट 101 के ऊपर आपको वेरी फास्ट मूवमेंट टुवर्ड्स 104, वेरी फास्ट. ये माना 101 के ऊपर आपको रैपिड प्रॉफिट देगा उसमें, और गुड सपोर्ट एट 98.5, उसके नीचे डेंजर में चला जाएगा स्टॉक. Okay, someone has bought Asian Paints 3100 call. Asian Paint 3100 call. Okay, again stock got rejected at a resistance of 3125. ये जोन निकालना थोड़ा टफ होने वाला है उसके लिए. 3130, 3160, इनिशियल मूवमेंट स्लगिश रहने वाला है. एटलीस्ट फॉर द होल ऑफ नेक्स्ट वीक आई सी, फॉर अगर आपका सिर्फ ये वीक का प्लानिंग है, तो 3100 टू 3175 इतना इजी नहीं होने वाला है इसको. उसके ऊपर वेरी शार्प मूव टुवर्ड्स 3300, और if I were to put a stop loss in it, I would put a stop loss at 3050. 3050 के नीचे प्रॉब्लम होगा. बट बी प्रिपेयर्ड कि वो इतना जल्दी
31 25 to 31 3200 इतना रैपिड मूव नहीं देगा. Okay. बहुत बहुत कंजेशन है उसके रास्ते. Okay. So someone has bought Bank Nifty futures at 43,300. He just needs a stop loss for that. Futures, Bank Nifty futures. Wow. 43,300 needs a stop loss here. Yeah. 30 minutes below 43,000. Okay. 30 minutes What's the stop below loss? below 40, if you want a tighter stop loss 42,990. हाँ वही 43 के नीचे अगर 30 Yeah. मिनट्स रह गया तो और अगर आपको और टाइटर चाहिए बिकॉज Vikram, फ्यूचर ट्रेड है Yeah. तो Vikram, we had 15 already- minutes below 43. 15 minutes below 43, don't be in that trade. Okay. Vikram, we have already given an update last week about stop loss being hit in our monthly call 1:1 call spread of Nifty 18,000 and 18,500. We are already given it in the live session. Next is okay, Bank Nifty bull call spread. Someone has taken Bank Nifty bull call spread. He's asking, is it okay to hold? If yes, what is the stop loss? The bull call spread is Bull call spread of strikes. Yeah, 43,200 call. हाँ. And he has sold 43,700 call. 500 पॉइंट 43,200. हाँ तो जब तक 42,600 के ऊपर है कोई टेंशन नहीं है उससे. 42,600. The 43,700 calls he has sold. Oh, 43. 43,200. This week. No idea. He's not said something, but assuming this week. 43,200. So keep your stop loss at yesterday's low. If it is this week's spread. Okay. If it is this week's spread, then keep your stop loss at 42,800. उसके नीचे ये फिर बहुत ड्रैग करेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो बहुत हैवी मेल्टिंग हो जाएगी. Shreyash, we have already covered your query few times back. You can just scroll, you can just rewind, and you can see we have already addressed 215 call option of Tata Power. Okay, next is someone has 330p sold BPCL. Wow. BPCL extremely good. 330 का put sold. Wow. So there's a huge resistance build up at 340. Okay, huge resistance. अब डिपेंड करता है आपने क्या प्राइस में बेचा है. 340 इतना इजी नहीं है इसको क्रॉस करना, और नीचे में बहुत सॉलिड सपोर्ट है एट 320. अभी तो इन द जोन खेल रहा है ये 320, बट यू आर एट द मनी पुट शॉर्टर हुआ, तो 340 नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर इट टू क्रॉस. थोड़ा सा केयरफुल. आई वुड से उसको आप स्ट्रैंगल कर दो. 340 का कॉल बेच दो टू प्रोटेक्ट दैट, नहीं क्योंकि अगर ये ऊपर ये इतना जल्दी में गिरेगा भी नहीं. 320 का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, बीच में खड़ा है. केयरफुल विद दैट. Okay. Sir, someone's asking view on Jindal Steel and overall. Just a second. You can keep 326 as a strict stop loss for the 330 put sold. 326. Okay. Jindal Steel. What about Jindal Steel? He's asking view on Jindal Steel and overall steel sector. Okay, so metal sector, very solid spike happened last week. Extremely solid spike out here. This spike is could see a little bit of cooling down this week. Little bit of cooling down. जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्रेश लॉन्ग अगर आप करने जा रहे हो
ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 575 का स्टॉप लॉस है इसमें। 583 चल रहा है, 575 का, और तब आप उसको लॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज अगर 575 नहीं होल्ड कर पाया तो एक बार डिप डाउन मार देगा टू 560 टू 555, सो कीप दैट इन माइंड उसमें। Okay. बट So we'll move on because there's a lot of questions ahead. I या think या steel sector, I'm sorry, but there's a lot of queries in line. बाय द डिप है, मेटल सेक्टर बाय द डिप है, इंस्टेंट इधर में नहीं। Yeah. So one of our regular watchers, Mr. Sunil, is here. He has asked a view on PNB 60 call option he has bought at 1.5, 1.6. पंजाब नेशनल बैंक, ओके। ओके, हाँ ऊपर निकल गया 5550, massive candle combination. So I need to see it trade above 5725. ओके, जब तक वो 5725 के ऊपर नहीं आएगा, मोमेंटम नहीं आएगी इसमें। और नीचे में अगर आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है अपना ट्रेड के लिए तो 5550 1 आवर बेसिस, उसके नीचे योर कॉल विल मेल्ट क्वाइट फास्ट। Okay. Next is India Mart 440C. Someone's holding. Very illiquid option counter. We can just give a resistance and I'll give a view on the stock. Yeah. Very illiquid option counter. Yeah. Again at a resistance. Okay. ये देखिए यहाँ में ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन का पुल बैक मार रहा है स्टॉक। Okay. Yeah, this was a head and shoulder breakdown. Stock is doing a pullback till it's it's going to see a lot of resistance in this zone 4450 to 4400. ये जोन में वापस सेलर्स आ जाएंगे इसमें, just be careful in that. Unless it doesn't start sustaining above 4450, it's not a buy. It's not a buy. Yeah. Priyadashni, I'm not able to get your question. Bought 180C of Exide. Oh, bouncing back. This could bounce back all the way to 185. Can bounce back. Cover this gap down area. 185 को resistance दिख रहा है मुझे. So you could have a movement up in this. ये 183, 185 अगर निकाल देगा तो स्टॉक आपका ऊपर 187 जाएगा. ये स्टॉप लॉस अगेन वेरी डीप इन दिस केस 178. Yeah. Okay. Next we have is Preeti ma'am. We have already covered Bank Nifty, so you can just have a look what is the stop loss and everything. The PEL futures. Someone is asking you on PEL futures. Piramal. Right. Dropping, double bottom type of structure out here. वहां से वापस गया नीचे. If it breaks 790 तो बहुत डेंजर है आपके लिए इसमें. 790 के नीचे ये पूरा खुला वो है इधर में स्कोप. They will be short covering in it above 855. Above 855 शॉर्ट कवरिंग है. उसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल नहीं दिखा रहा है मुझे. और Okay. Yeah, and if it does not hold 815, तो it's not just एक लास्ट देख लेता हूँ 1 minute. कोई अगर बुलिश हार्मोनिक बन रहा है क्या? या 815 पर अच्छा सपोर्ट है. 815 के पास में अगर आप फ्यूचर अटेम्प्ट लॉन्ग करने का कोशिश करोगे, कीप अ स्टॉप लॉस एट 806, 10 रुपी रिस्क आउट देयर उसमें. और 855 के ऊपर मैसिव शॉर्ट कवर. Okay. The Bajaj Finserv. You want Bajaj Finserv? Yeah, okay.
I think we've taken Bajaj Finserv already in the last session. He's bought at 1513. Just say, can he hold or sell? Yeah. So Bajaj Finserv, bullish harmonic reversal. Last Saturday we had covered this. First target already done of that reversal. Okay, 1575 वहां से reaction मारा है स्टॉक ने और it might retest this zone 1525 1500 might or the next resistance build up is 1615 इसके केस में 1615 नेक्स्ट टारगेट बनता है इसका और गुड सपोर्ट एट कोई 1520 बुलिश हार्मोनिक है तो अपसाइड इज ओपनिंग अप फॉर इट या View on Federal Bank, someone's asking, can we buy put at this juncture? फेडरल बैंक He's just asking yes or no. 142 के ऊपर अगर 1 आवर भी रह गया तो एग्जिट द पुट Can you buy put at this level and put a stop loss of 142? Yeah, so 142.25 का stop loss है hourly for that put. Okay. Yeah. Okay. This is done. This is done. This is done. This is done. India Mart we've covered. श्रेयस डे टाटा पावर के बारे में आपको स्टॉप लॉस बताया गया है. किसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो मोमेंटम है, किसके नीचे गया तो प्रॉब्लम है. यू कैन जस्ट गो बैक एंड सी. ओके सर, व्यू ऑन मारुति एंड टीवीएस मोटर्स. Maruti. I think this will be the last question because we are approaching 11:40. हाँ, Maruti is approaching a bullish harmonic. Okay, यहाँ पर न buy है न sell है. Let it come down to 79.50. Okay. तब it's a long trade. Okay. तब वहाँ long trade attempt करेंगे, उसके पहले नहीं. ना इसमें ना buy ना sell, दोनों के बीच में फंसा हुआ है स्टॉक. I would इतना छोटा फॉल के लिए मैं शॉर्ट भी नहीं एडवाइस करूंगा. इनफैक्ट बाय द डिप है नियर 79.50. Okay. Okay. And TVS Motors. Yes, Motors. Yeah. बुलिश हार्मोनिक रिवर्सल हुआ था, निकल गया ऊपर इसमें. या सो दिस ये बहुत कंसोलिडेशन में घुस गया है. बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है. इतना जल्दी ना अप जाएगा अप ना डाउन जाएगा. नीचे सपोर्ट एट 1050, ऊपर रेजिस्टेंस एट 1150. उस जोन के अंदर खेलेगा ये. क्लैरिटी नहीं है फिलहाल इसमें. Okay, sir, one of our regular viewers, Priyadarshini is there. I'll take her question. Cash का उनका कुछ problem हो गया है. She needs urgent help. और Eicher Motors, someone's asking, we already have our view running of previous week in Eicher. वो एक्टिव है. Yeah. Sir, MEHAI Technology, she has bought. BSE stock. BSE stock. She has wrongly bought at 40. She ended up buying it at 46 and now it is at 19. That's what she's saying. Yeah, it's a small cap penny stock. Any recovery? Small cap penny stock. Massive resistance at 26. Okay. संपत कुमार, बता दीजिए आपका क्वेश्चन. We'll just take it as well. Last. It's a pump and dump story, sir. If you see 2021. हाँ pump and dump भी है इसमें, कुछ है ही नहीं. ये स्ट्रक्चर है. ये मैं बोलूंगा ये स्टॉप लॉस बना दो 17 रुपये. 17 के नीचे कोई फायदा नहीं है. और चलेगा, अगर चलना भी होगा ना स्टॉक को तो बहुत ही मरमर के चलेगा. above 23-24 you might see 35 and at 35 if you have it in use, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देता है तो उस पर थोड़ा आप निकल सकते हो अगर 35 तक गया. Sir, last means last. Okay, Grasim Futures के ऊपर. Grasim. You have priorities. Grasim Futures के ऊपर व्यू पूछा गया है. Just one second. Yeah. Very thin line of support. Support is at 1700 to 1675. I think I've drawn this. Yeah, 1675. 1723 hai. So depending on the risk, how the trade has been placed by the client. Yeah, if you see 1700 violated,
आई वुडंट एडवाइज यू टू होल्ड द स्टॉक, फिर वो बहुत मर के ऊपर जाएगा, बहुत अभी अभी साइडवेज है। 1700 ये जोन सपोर्ट है, 1675 का, और वो ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत खराब हो जाएगा स्टॉक के लिए, नहीं तो एक टच एंड गो हो सकता है, यू नो, ये वाला जो जोन है। इफ यू आर लॉन्ग देन यू बी प्रिपेयर्ड, तो 1700 टू 1675 दिखाएगा। इफ यू आर शॉर्ट, बिकॉज आई डोंट नो वेदर लॉन्ग शॉर्ट क्या है, योर ट्रेल स्टॉप लॉस इज एट 1745। ओके, आई थिंक दैट्स इट। बिफोर गोइंग गाइस, कल हमारे साथ सर का इचिमोकू सेशन है 1 आवर का, जहाँ पे वो आपको इचिमोकू सिखा रहे हैं। इट्स अ प्री रिकॉर्डेड सेशन, तो जिनको और डिटेल्स चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है ICICI डायरेक्ट ऑफिशियल। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च में जाइए, ICICI डायरेक्ट ऑफिशियल टाइप कीजिए and join our channel, and for more details आपको बाकी सब वहीं पे दिख जाएगा। So thank you very much for joining us today on a 31st, and happy new year in advance, or please keep your capital safe, and thank you Dinesh sir for being a part. Thank you, Gaurav. Thank you, ICICI, and thank you, viewers, and wishing everyone a very happy and prosperous new year out here from my side.